Hello friends, welcome to our YouTube channel and we hope that you will like the video. Today's video is going to be of Science 9th class, which was our chapter. Today we will complete it. Let's do this. If you like the video, please subscribe to the channel and share it with your friends. Recall which gas is required for photosynthesis. Find out the role of transpiration in plants' epidermal cells of the roots, whose function is water absorption. Commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin, chemical substance with waterproof quality, on its outer surface. Can we think of a reason for this? Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells, which constitute the cork cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. Fig. 6.6. They also have a substance called suberin in the TR walls that makes them impervious to gases and water. Cbse Bapthimi Epodemos Fig. 6.6. Protective floss 6.2.2. E. Complex permanent tissue. The different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells, which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissues are made of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular tissue 72 is a distinctive feature of the Cramples plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In Fig. 6.3 show a section of stem. Can you see different types of cells in the vascular bundle? Xylem consists of truids, vessels, xylem parenchyma, Fig. 6.7a, b, Cj and xylem ves tracheids and vessels have T-like walls. And many are dead cells when mature. Tracheids and vessels are tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function. Phloem is made up of 5 types of cells: sieve cells, slave tubes, companion cells. Phloem fibers and the phloem parenchyma, Fig. 6.7, d. Slave tubes are tubular cells with perforated walls. Phloem transport food from leaves to other parts of the plant. Except phloem fibers. Other phloem cells are living nel track venal save plate save tube component cell ed sects of. याद करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका का पता लगाएं। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, जिनका कार्य जल अवशोषण है, आमतौर पर लंबे बाल जैसे भाग रखती हैं जो कुल अवशोषण सतह क्षेत्र को बहुत बढ़ा देते हैं। रेगिस्तानी पौधों जैसे कुछ पौधों में एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्यूटिन, जलरोधी गुणों वाला रासायनिक पदार्थ, की एक मोटी मोमी परत होती है। क्या हम इसके लिए कोई कारण सोच सकते हैं? क्या पेड़ की शाखा की बाहरी परत युवा तने की बाहरी परत से अलग होती है? जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक में कुछ परिवर्तन होते हैं। कॉर्टेक्स में स्थित द्वितीयक मेरिस्टेम की एक पट्टी कोशिकाओं की परतें बनाती है जो कॉक का निर्माण करती हैं। कॉक की कोशिकाएं मृत होती हैं और बिना अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित होती हैं। चित्र 6.6। उनकी दीवारों में सबेरिन नामक एक पदार्थ भी होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। कार्क सीविला बुप्टीमी एपोडेमोस चित्र 6.6।
सुरक्षात्मक फ्लोसों 6.2.2 ई जटिल स्थायी ऊतक। हमने अब तक जिन विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर चर्चा की है वे सभी एक प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं जो एक दूसरे के समान दिखते हैं। ऐसे ऊतकों को सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है। स्थायी ऊतकों का एक और प्रकार जटिल ऊतक है।